Hello students, in this video I am Kumar going to discuss very important topics, that is plasma oscillations and expression for plasma frequency in plasma physics for B.Sc. Part 3 physics courses for all universities in lecture number 4 of plasma physics. First of all, plasma oscillations. The first simple treatment of plasma oscillations was given by Tonks and Langmuir, who considered an idealized plasma with no thermal motion of ions and electrons, in which two types of oscillations are basically possible. First, the electron oscillations, which are so fast that ions can be regarded as stationary, and secondly, the ion oscillations, which are so slow that electrons at all times adjust their energy and density so as to remain in equilibrium and satisfy Boltzmann distribution. The disturbed regions are presumed to contain a large number of particles and to have large dimensions compared with the distance between the atoms. प्लाज्मा ऑसिलेशंस के बारे में सबसे पहले सिंपल ट्रीटमेंट को दिया साइंटिस्ट टॉन्क्स एंड लैंगमुर ने, जिन्होंने एक आइडियलाइज्ड प्लाज्मा, एक आदर्श प्लाज्मा को सपोज किया जिसमें कोई थर्मल मोशन, आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स का कोई थर्मल मोशन, थर्मल मीन्स विच इज रिलेटेड टू हीट, कोई तापीय मोशन, ताप के कारण माने हीट के कारण जो मोशन है आयंस का एंड इलेक्ट्रॉन्स का, वह टॉन्क्स एंड लैंगमुर के का आइडियलाइज्ड प्लाज्मा में कोई थर्मल मोशन आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स का उन्होंने सपोज नहीं किया, क्योंकि आइडियलाइज्ड प्लाज्मा कंसीडर किया उन्होंने. Therefore, two types of oscillations are basically possible. दो ढंग का ऑसिलेशन पॉसिबल है प्लाज्मा ऑसिलेशंस में. एक इलेक्ट्रॉन्स ऑसिलेशंस एंड दूसरा सेकेंडली आयंस ऑसिलेशंस. अब इलेक्ट्रॉन्स ऑसिलेशंस इतना फास्ट होता है जिससे कि आयंस को स्टेशनरी माना जा सकता है. उस सिचुएशन में oscillations of electrons are very fast, so fast that ions oscillations can be supposed to be stationary. ये फर्स्ट टाइप का प्लाज्मा ऑसिलेशंस में फर्स्ट टाइप का ऑसिलेशन इलेक्ट्रॉन्स ऑसिलेशंस, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का ऑसिलेशंस काफ़ी फास्ट होता है जिससे कि आयंस ऑसिलेशंस को स्टेशनरी सपोज किया जा सकता है. एंड सेकेंड टाइप का ऑसिलेशंस है आयंस ऑसिलेशंस, जिसमें आयंस का ऑसिलेशन, क्योंकि आयंस काफ़ी नियरली सपोज टू बी स्टेशनरी आयंस ऑसिलेशन, सो आयंस ऑसिलेशन आर वेरी स्लो, so slow that electrons at all times adjust their energy and density so as to remain equilibrium and satisfy Boltzmann distribution. तो आयंस का ऑसिलेशन इतना स्लो होता है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा अपना एनर्जी एंड डेंसिटी को एडजस्ट करके इक्विलिब्रियम में होता है एंड बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को सेटिस्फाई करता है. और thus in plasma the disturbed regions are presumed to contain a large number of particles and to have large dimensions compared with the distance between the atoms. इस प्रकार प्लाज्मा में जो डिस्टर्ब रीजन्स हैं ऑसिलेशन के कारण, जो डिस्टर्ब क्षेत्र है प्लाज्मा में, तो उसे लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स से वह लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल को कंटेन करता है. उसमें लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे. डिस्टर्ब रीजन्स इन प्लाज्मा में लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं जो जिनका डायमेंशन एटम्स के बीच सेपरेशन, एटम्स के बीच में सेपरेशंस के का काफ़ी अधिक होता है. दैट इज dimensions, that is the disturbed regions in plasma
are supposed to contain a large number of particles and to have large dimensions compared with the distance between the atoms. तो प्लाज्मा में इसके कारण प्लाज्मा ऑसिलेशंस के कारण, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस ऑसिलेशंस के कारण प्लाज्मा में जो डिस्टर्ब रीजन है, जो प्रभावित क्षेत्र है, वह उसमें उसे सपोज किया जा सकता है कि उसमें बहुत से पार्टिकल्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और जिनका डायमेंशन एटम्स के बीच में जो सेपरेशन होता है, जो दूरी होती है, उसके कंपेरिजन में बहुत अधिक होता है. नाउ वी हैव टू after discussing plasma oscillations, we have to derive the expression for plasma frequency, which is denoted by the symbol omega p. And for it, to derive the expression for plasma frequency omega p, suppose a region of uniform density of electrons and ions bounded by two imaginary planes perpendicular to x-axis. Let each electron is displaced in the x direction by a distance capital D. Then the change per unit distance along x-axis is equal to small d capital D upon dx, that is d of dx of capital D, that is rate of change of displacement of distance displaced by each electron, which is capital D. So rate of change of distance displaced by each electron along x-axis is a small d, that is d upon dx capital D, that is dd, a small d capital D upon dx. तो प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन को डिराइव करने के लिए हमने सपोज किया है कि एक यूनिफॉर्म रीजन है, यूनिफॉर्म डेंसिटी प्लाज्मा में एक रीजन है यूनिफॉर्म डेंसिटी का, समरूप घनत्व का क्षेत्र है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस दो इमेजिनरी प्लेन्स जो कि एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है उसके द्वारा बाउंडेड है. एंड ईच इलेक्ट्रॉन, सपोज किया जाता है कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड होता है. कितना डिस्टेंस है? कैपिटल डी डिस्टेंस है. ईच इलेक्ट्रॉन प्लाज्मा ऑसिलेशंस के कारण, आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑसिलेशंस के कारण, जहाँ की इलेक्ट्रॉन्स ऑसिलेशंस डोमिनेट होता है, क्योंकि आयंस ऑसिलेशन काफ़ी स्लो होता है, इसलिए यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन्स ऑसिलेशंस को कंसीडर किया जाता है. सो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स ऑसिलेशंस ईच इलेक्ट्रॉन इज डिस्प्लेस्ड इन द एक्स डायरेक्शन बाय ए डिस्टेंस कैपिटल डी. तो इलेक्ट्रॉन्स ऑसिलेशन के कारण प्रत्येक इलेक्ट्रॉन कैपिटल डी डिस्टेंस से एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेस्ड हो जाता है अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से, और इसलिए चेंज पर यूनिट डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस इज d upon dx of capital D, that is dd upon dx. Now suppose a region of plasma of volume dV equals to dx into dy into dz. Therefore, total charge contained in volume dV of the plasma, region of the plasma, is dV equals to Ne into dV multiplied by dd upon dx, where dd upon dx is the per unit change in distance of electron along x-axis. Hence, charge density of electrons is given by, which is charge per unit volume, d rho is equal to charge, total charge contained in volume dV is Ne dV multiplied by dd upon dx upon volume, that is dV. So charge density of electron is given by charge per unit volume, which is denoted by the symbol d rho, equals to total charge contained in volume dV equals to Ne dV into dd by dx upon dV. So dV will cancel out in the numerator and denominator. So we will left with only small n e into dd upon dx, where small n is the number density of electrons per unit volume. Number density of electrons, that is per unit volume, that is number of electrons present in per unit volume in plasma of volume dV. So
N is the number of electrons, that is number density of electrons, that is number of electrons present per unit volume of the region of plasma of volume dV. And a small e is the charge of an electron. Now this charge produces an discharge density, that is d rho is equal to Ne multiplied by dt upon dx. This charge produces an electric field E vector along the x direction, which is given by Gauss's law in electrostatics and Poisson's law, which is divergence E, that is del operator dot E vector, divergence E vector equals to d rho upon epsilon naught, and value of d rho we can substitute from equation 1. We can put the value of d rho, which is Ne into dt by dx, from equation 1 in this divergence E, that is del operator dot E vector equals to d rho upon epsilon 0, and d rho is Ne dt small d capital D upon dx upon epsilon naught. Along x-axis, we can write divergence E vector, that is del operator dot E vector. Along x-axis, divergence E vector को represent किया जा सकता है de upon dx, de small d capital E upon dx. इसका x component लिया गया divergence E vector का. So d upon dx equals to Ne upon epsilon naught multiplied by d small d capital D upon dx. Now dx and dx in the denominator of both sides will cancel out. अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड में के डिनोमिनेटर में भी dx प्रेजेंट है, राइट हैंड साइड RHS में भी प्रेजेंट है, दोनों कैंसिल हो जाएगा. Therefore d equals to hence d equals to a small n e upon epsilon naught multiplied by dt. Now integrating both sides, we have integral of d is equal to integral of Ne upon epsilon 0 multiplied by dt. And since Ne upon epsilon 0 is constant, it can be taken out of the bracket. So we have integral Ne upon epsilon naught constant है, इसलिए इंटीग्रेशन सिंबल से बाहर कर दिया गया. तो there so RHS becomes LHS is integral d and RHS is a small n a small e upon epsilon naught out of the integral, and under integration it is dt. Ne upon epsilon 0 multiplied by integral, that is Ne upon epsilon naught integral dt. और integration of d is capital E, integration of small d capital E is E capital E equals to Ne, or we can write after integration LHS becomes or capital E equals to Ne upon epsilon naught multiplied by integral of dt, small d capital D is capital D, using the integration formula. Integration formula का यूज करने पर LHS में integration of d is equal to capital E, and in RHS integral of dt is capital D. So we have capital E is equal to n a small e upon epsilon 0 multiplied by capital D plus and a constant of integration c, a constant of integration जो कि indefinite integral में यूज किया जाता है. यहाँ indefinite integration है, इसलिए constant of integration है. This is equation number 2 where c is a constant of integration. Constant of integration c can be taken as 0 because no force, as there is no externally applied force, no externally applied electric field or force, there is no externally applied field, so integration constant c can be taken as 0. So we have since no externally field, we have c is equal to 0, putting c is equal to 0 in equation 2, as no external field is applied, putting यहाँ कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है. जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वह इलेक्ट्रॉन्स के ऑसिलेशंस के कारण हो रहा है, बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है. इसलिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को यहाँ पर 0 दैट इज नेगलेक्ट किया जाएगा. c इक्वल टू 0, पुटिंग c इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, we get capital E equals to Ne upon epsilon 0 multiplied by capital D. So
integration constant is taken to be 0 because no external field is applied. Here field is electric field is produced due to this charge density of electron, which is given by d rho. Now equation 2 becomes reduces to capital E equals to Ne upon epsilon 0 multiplied by capital T. Now force acting on the electron along x-axis is given by capital F using Newton's second law of motion. F is equal to mass into acceleration, and acceleration is d square capital D upon dx square. D square capital D upon dx square is the acceleration of the electron along x-axis, and force acting on the electron using Newton's second law of motion is force is equal to mass multiplied by acceleration. न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का यूज करने पर फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन स्मॉल m इनटू एक्सेलरेशन d स्क्वायर कैपिटल D अपॉन dx स्क्वायर. And this force is a restoring force because force acting on the electron, oscillating electron in plasma is opposite to the direction of electric field. हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में निगेटिवली चार्ज, चूंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव है, तो निगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स जो अप्लाई होता है वह इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट होता है. सो दिस फोर्स इज रिस्टोरिंग फोर्स. सो वी कैन राइट फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस स्मॉल e into capital E. And from equation 4 using Newton's second law of motion, force is mass into acceleration m into d square small d square capital D upon dx square, which is acceleration of the electron, oscillating electron along the direction of x-axis. But this force is restoring force because force acting on the electron is negatively charged particle. So force acting on the electron in the electric field is opposite to the direction of electric field. So we have m into d square small m into d square d upon dx square equals to force acting on the electron in the electric field is opposite to the direction of electric field. So negative sign is taken, minus small e into capital E. This is a small e into capital E, the force acting on the electron in the direction opposite to the direction of electric field. So minus sign is taken. So this is the restoring force, and a small e is the charge of an electron and a small m is the mass of an electron. Now substituting the value of E, electric field, from equation 3 in this equation, suppose it is equation number 5. So using 3 in 5, in RHS of equation 5, we have using 3 or putting capital E is equal to, or putting using 3 5 or putting the value of capital E is equal to n small e upon epsilon naught into capital D in RHS of equation 5. Equation 5 we have equation 3 से capital E इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू को 5 के RHS में रख दिया गया. 5 का RHS है माइनस स्मॉल e into capital E, LHS है m d square d upon dx square. So we have m into a small m into d square capital D upon dx square plus equals to minus a small e into capital E n small e upon epsilon naught multiplied by capital D, that is minus n e square e into e, a small e into a small e square capital D upon epsilon naught. We have now d square, acceleration of the oscillating particle along x-axis is d square small d square capital D by dx square is d square capital D upon dx square equals to minus n e square m small m upon epsilon naught. m से डिवाइड कर दिया जाए बोथ साइड्स में, तो d स्क्वायर d अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस n e स्क्वायर epsilon 0 m epsilon 0 मल्टीप्लाइड बाई d कैपिटल D, और सेकेंड टर्म को RHS को LHS में ले आया जाए आफ्टर टेकिंग RHS द टर्म, आफ्टर टेकिंग द टर्म इन RHS टू LHS वी हैव और d स्क्वायर d अपॉन dx स्क्वायर प्लस ne स्क्वायर
m small m epsilon plus Ne square upon a small m epsilon naught multiplied by d is equal to 0, and this is equation number 6, and this is the oscillatory equation of electrons in plasma. D square capital D upon dx square plus Ne square upon m epsilon 0 into capital D. It is the oscillatory motion of the electrons in with electron. This is the oscillatory motion of the electron in the plasma with angular frequency given by Ne square upon m epsilon 0. So we have Ne square. So this is the equation of the form d square capital D dx square plus omega square multiplied by capital D is equal to 0, and suppose this is equation number 7. Comparing this equation to equation number 6, and this equation 7 is the equation of oscillatory motion, simple harmonic motion. Comparing this equation 6 and 7, we have Ne square upon m epsilon 0 is equal to omega square, and where omega p is the angular plasma frequency or plasma angular frequency. So plasma angular frequency omega p. So we have omega p square is equal to, here we can write omega p square in place of omega. So omega p square equals to Ne square upon m epsilon naught. Since equation 6 is the oscillatory motion of electrons, oscillatory motion of an electron in electron under consideration in plasma with omega p square is equal to Ne square upon m epsilon 0. Therefore, omega p, that is plasma angular frequency, is omega p is equal to root under Ne square upon m epsilon naught, and this is the expression for plasma angular frequency omega p, which is given by equation number 8. Omega p equals to root under Ne square upon m epsilon 0, and this is the this is the expression for plasma angular frequency. And plasma frequency we can obtain Np. We can also obtain plasma frequency Np. It is plasma angular frequency, and plasma frequency Np equals to omega p upon 2 pi, and we have Np. Therefore, Np equals to 1 by 2 pi. Omega p is root under n small n E square upon m epsilon 0, where epsilon 0 is the permittivity of free space or light. So Np is equal to, that is plasma frequency. Omega p is the plasma angular frequency, and we know the relation n is equal to omega by 2 pi. Angular frequency is equal to omega upon 2 pi, angular frequency upon 2 pi. So using that relation, Np is equal to plasma frequency, Np is equal to omega p, plasma angular frequency upon 2 pi, and omega p is expression for omega p is equal to root under Ne square by m a small m epsilon 0. Omega p is equal to root under Ne square upon m epsilon 0, which is given by equation 8, which is the expression for plasma angular frequency. So Np is equal to omega p upon 2 pi, therefore Np is equal to 1 by 2 pi into omega p from equation 8 is Ne square upon a small m epsilon 0, and this is the final expression, that is expression for plasma frequency Np, below which incident waves are reflected from the plasma. So plasma frequency or plasma angular frequency is that critical frequency below which incident waves are reflected from the plasma. Now this video is completed. अब यह वीडियो पूरा होता है. Thanks all of you for watching my YouTube channel Physics Quantum Classes.